गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम लोग चौथे क्लास में हैं, फोर्थ क्लास ऑफ करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। यहाँ पर मेन मकसद ये है कि जो भी ये मैं 5 सेशंस ले रहा हूँ मैं, है ना, ये आज फोर्थ होगा, तो इसमें ये मकसद है कि आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए इसमें जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है जो कि चर्चा में रहा है, करंट एस्पेक्ट में है, हाँ, जहां पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस अधिक है। और आज भी मैं ये बाइलिंगुअल रखूंगा मैं, ठीक है। आई विल बी कंडक्टिंग दिस सेशन इन अ बाइलिंगुअल मोड, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं डिस्कस करूंगा मैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कि लास्ट 4-5 ईयर्स से न्यूज में, और उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोगों ने स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, डिफेंस एंड न्यूक्लियर और हेल्थ डिजीज, उसके बारे में हमने चर्चा की है। आज के सेशन में आई विल गो थ्रू न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, है ना। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ये याद रखना है, इट इज नॉट ओनली यूपीएससी एग्जाम। मैं हर बार ये बात को रिपीट करता हूं कि जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक को तैयार कर रहे हैं तो कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। अभी जैसे मैंने बताया कि जेपीएससी का परीक्षा होने वाला है, तो वहां भी कुछ ना कुछ करंट से जुड़े हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन होंगे, है ना। और साथ साथ में अभी जो भी एग्जाम्स होंगे, यूपी पीसीएस, एमपीएससी, आरएएस, जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है, राइट। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू दोज एरियाज ऑफ टॉपिक्स which can really help you solve questions in all types of competitive exams. That what we are doing that. Let me see, I am looking at chat box. आज भी मैंने अपने सामने लैपटॉप को रखा है। आपके जो भी रिस्पॉन्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, आई विल एड्रेस इट, है ना। तो आज भी मैंने यहाँ पर, तो अंकित हैज ज्वाइंड, शिवराज इज देयर, लक्ष्मी द्विवेदी इज देयर, प्रतीक्षा हैज ज्वाइंड देयर, पंकज हैज ज्वाइंड देयर, अंगद हैज ज्वाइंड देयर, and Queen has joined. So I can see they're the people who have joined right now, है ना। तो हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हर बार एग्जाम में होता है और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, दैट्स अबाउट द नोबेल प्राइजेस, राइट। यू नो दैट एवरी ईयर in the month of October, Nobel Prize Committee announce Nobel Prizes in physics, chemistry and medicine or physiology. नेम ऑफ साइंटिस्ट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, कि वहां पर यूपीएससी में नेम ऑफ साइंटिस्ट पूछ दिया जाए, उसके चांसेस कम है, बट आपको प्रिपेयर्ड रहना है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देयर। बट जनरली जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो कि वन डे एग्जाम होता है, तो वन डे एग्जाम में तो डायरेक्ट नाम पूछ देते हैं कि हु आर द नोबेल प्राइज विनर्स इन केमिस्ट्री, तो ऐसे नाम पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट ऑप्शन दिया जाता है। जीके जिस बोलते हैं ना, जनरल नॉलेज, यूपीएससी में जीके के साथ साथ जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल अवेयरनेस ये पूछा जाता है। यूपीएससी परीक्षा में केवल ये बात नहीं है, इसके साथ साथ में कौन से एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन से एरिया ऑफ साइंस जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, वहां क्वेश्चन होता है। सो व्हाट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड इज दैट कि व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, you must be aware of the scientific breakthrough, technological development for which they have been given the Nobel Prizes, right? And then you have to again look into the application part of the technology. Either they have been applied and we are using it right now in our day-to-day life, or they're emerging out. That means in future there will be number of applications will be there. So you have to look from that perspective and accordingly you have to prepare the topics there. So let's look at last year Nobel Prizes there. So first of all, Nobel Prize in Physics 2023. Now 3 Nobel laureates are there, Pierre Agostini, then you have a Ferenc Krauss, and then Annie Louvier. These are 3 scientists who got Nobel Prize 2023 in physics. Now what are their work? Now let's understand what are their work areas there. They got for experimental method that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter. क्या चीज पे मिला है? एटोसेकेंड।
which refer to this one, 10 to the minus 8 second. मतलब सेकेंड का भी 10 to power 8 times smaller, जो हम कभी रियलाइज नहीं कर सकते कि हाउ फास्ट इट कुड बी देयर. Pulses of light. See, light has dual nature. Light has dual nature. Light is in the form of particle also. At the same time, light has the wave nature, energy. So the pulse of the light at 2 seconds, and then interaction. How this light interaction with electron. Electron there, right, in matter. What is matter? Solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein condensation, whatever form of matter is there, how they interact there. So this is the scientific study for which 3 scientists won Nobel Prize in physics there. They've been given the Nobel Prizes, right? Out of 3, 1 is female. ठीक है. अब यहाँ पर ये आता है कि अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आना होगा तो क्वेश्चन क्या होगा, right? What is the form of question there? तो ये जो एरिया है, what I have written on the board, that is the light with electrons, right? So what is comes here when you say pulses, it refers to photons, packet of energy, what you call quanta of energy, photon, right? Light is made of photons, and that photons in terms of movement of electrons. That means when this light pulses, right, when this light pulses goes there, then how the electron movement is there. That means we are referring from light and the point of electrons. So there is one emerging area of electronics. There is electronics area called photonics, है ना. यहाँ पर कौन सा एरिया इमर्ज हो रहा है? फोटोनिक्स एरिया का इमर्ज हो रहा है. हाउ द फोटोन, द लाइट एंड देयर इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. ये एरिया जो है फोटोन विद द इलेक्ट्रॉन्स, फोटोनिक्स, दैट इज वन इमर्जिंग एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स. और इसके कई एप्लीकेशंस होंगे फ्यूचर में, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर्स. द फ्यूचर कंप्यूटिंग विल बी क्वांटम. सो व्हेन यू टॉक अबाउट क्वांटम, यू आर टॉकिंग अबाउट एटम्स एंड द मॉलिक्यूल एट स्मॉलर लेवल. उस स्टेज पे होगा. तो इफ यू लुक एट हियर दिस नोबेल प्राइज, है ना, ये जो है 3 लोगों को जो दिया गया नोबेल प्राइज, है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट. एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट को जनरेट करने के लिए लैब में, तो फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स, इसके लिए दिया गया यहाँ पर, है ना. फॉर दैट दे हैव बीन गिवन, एंड देन अगेन इलेक्ट्रॉन्स पार्ट ऑफ इट. फोटोनिक्स मैंने बताया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हियर. लेट मी ब्रिंग हियर पार्ट ऑफ, नाउ लुक एट हियर दिस वन. जब भी नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट होता है, व्हेनेवर नोबेल प्राइज इज अनाउंस्ड, तो देयर इज अ प्रेस रिलीज. उस समय प्रेस रिलीज होता है, उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है. अब मैंने भी क्या बताया कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, प्लस यू हैव टू कनेक्ट विद एप्लीकेशन. नाउ लुक एट हियर दिस वन. अगेन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. सी व्हाट इज गिवन, एक्सपेरिमेंट विद लाइट कैप्चर द शॉर्टेस्ट ऑफ मोमेंट्स. इन्होंने टूल्स बनाए, ऐसे टूल्स, फास्ट मूविंग इवेंट्स जैसे यहाँ पर है. अब यहाँ पर देखो, दिस इज वन इंपॉर्टेंट. इसका जो मेन इंपॉर्टेंस पार्ट ये है. मैं इसको जूम करता हूं, ठीक है, लेट मी जूम आउट देयर. ये पार्ट को आपको ध्यान रखना है. दिस इज द मेन पार्ट. किसका एप्लीकेशन कहां पर होगा, ये टेक्नोलॉजी जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, वेयर दे विल गेट अप्लाइड हियर. सो इफ यू लुक एट, आई हाईलाइट द पार्ट ऑफ इट. लुक एट हियर, पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन मेनी डिफरेंट एरियाज. इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी मैंने बताया, फोटोनिक्स. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल
हाउ इलेक्ट्रॉन्स बिहेव इन अ मटेरियल। इलेक्ट्रॉन कोई भी मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, कोई भी ऐसे मटेरियल्स हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर, दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काम करता है, तो थ्रू द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन अंडरस्टैंड। नाउ लुक एट हियर, ये क्या लिखा हुआ है, एटोसेकेंड पल्सेस है। एटोसेकेंड पल्सेस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। कहां इसका एप्लीकेशन हो सकता है, लैब में अगर हमें कोई भी तरह के मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कई बार क्या होता है केमिकल कॉम्पोजिशन, है ना, कई बार होता है केमिकल कॉम्पोजिशन, यू हैव ए सैंपल एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि उस सैंपल में कौन कौन से एटम्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, बोरोन, एल्युमिनियम, कॉपर, what kind of materials that particular material is made up of. Using this method, scientists can find out those composition. वो जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, क्या चीज से बना हुआ है, उसकी क्या क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसका पता लगाया जा सकता है। ये पहला एप्लीकेशन है। देन व्हाट कम्स हियर, दैट सेम टाइम इफ यू लुक एट हियर मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, medical diagnostics in the field of medical science, right, in the field of medical science. So when we look into medical science, in the field of medical diagnostic, what is diagnosis? Diagnosis का मतलब क्या है, cause of a disease, finding out the cause of the disease, कि वो disease किस कारण से है, is it because of bacteria, virus, what are the impact on the human body. So this technology in future we can use in medical diagnostic method. आज हम जब हॉस्पिटल जाते हैं कई तरह की टेस्टिंग की जाती है ना, जैसे उसमें कई बार एमआरआई, आपको पता है मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग होता है, फिर आपको पता है सीटी स्कैन, ये सारे मेथड यूज होता है। तो आने वाले फ्यूचर में एटो सेकेंड ये जो टेक्नोलॉजी है, दिस विल फाइंड द एप्लीकेशन पार्ट, राइट, this is going to find the application part. So what is very important here, very important part here when you look at the application part, ठीक है, कि ये टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहां पर है। सो ये जो है एप्लीकेशन पार्ट, आपको हमेशा कोई भी टेक्नोलॉजी का एरियाज ऑफ एप्लीकेशन देखना है। फर्स्ट इज व्हाट, स्टडी ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, ऑफ सैंपल, कोई भी जो सैंपल है या कोई भी मटेरियल्स, वो किससे बना हुआ, क्या चीज से बना हुआ है, हम इस मेथड पे यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस मेथड देयर। सेकेंड इज व्हाट, इट कैन बी यूज इन टर्म्स ऑफ फोटोनिक डिवाइसेस। क्या होता है फोटोनिक डिवाइसेस, वेयर द लाइट, हियर branch of electronics, right, that is called photonics। ऐसे जो डिवाइसेस हैं जो जनरली, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सेंसर्स, एडवांस सेंसर वगैरह जो होते हैं, आपको पता है सेंसर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, और वो कई चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड। तो ये जो सेंसर्स होते हैं, एडवांस सेंसर जो है, तो फ्यूचर एडवांस सेंसर्स दैट वर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, लाइट कैन बिकम मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वहां पर ये चीज है। थर्ड इज व्हाट आई रिटन हियर, मेडिकल डायग्नोसिस, बोलते हैं नैदानिक परीक्षण, क्लिनिकल स्टडीज, मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, उसका पता लगाया जा सकता है, वहां पर ये टेक्नोलॉजी का यूज होगा। एप्लीकेशन जो है, जो ये एक्टो सेकेंड फॉर विच नोबेल प्राइज हैज बीन गिवन, ये जो पल्सेस है, इसका एप्लीकेशन यहां पर हो सकता है। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन दिस एरियाज।
जब हम कहते हैं केमिकल कंपोजिशन, व्हेन यू लुक इनटू केमिकल कंपोजिशन ऑफ सैंपल ऑफ मटेरियल, तो वी कैन यूज इन डिफरेंट वेज, है ना। कहाँ यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल वी कैन हैव इन फूड टेस्टिंग, right? We can use in this metallurgy. What type of metallic structure has been developed? We can use in chemistry, chemical analysis. See, जब हमें केमिकल कॉम्पोजिशन पता करना है तो हम कई जगह पे इसका यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री, मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री, इवन एस्ट्रोनॉमी, इवन कैन फाइंड एप्लीकेशन इन एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, जैसे गैलेक्सी, डिस्टेंट गैलेक्सी, stars and galaxy, right? A different type of thing in the universe. So with the area of this method, even we can find out the composition, what they are made up of. Hydrogen, helium, क्या चीज से बना हुआ है, उसका हमें पता लग सकता है। हमेशा याद रखना है, नोबेल प्राइज कभी भी कोई भी चीज दिया जाता है उसका कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के लिए एप्लीकेशन है। आज है या आज हो रहा है या कल होगा, भविष्य में होगा। और व्हाट हैपेंस विद द यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी कई बार ऐसे टेक्नोलॉजी को अपना बेस बना के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मेनी टाइम यूपीएससी क्वेश्चन सेटर लुक इनटू द करंट अफेयर्स, टेक दोस काइंड ऑफ एरियाज ऑफ वर्क और साइंस व्हाट इज देयर इन द न्यूज एंड देन सेट द क्वेश्चन कि कहां का इसका एप्लीकेशन हो सकता है, राइट। एंड हु नोज इन फ्यूचर this I want to mention quantum computers, right? Light as a mode of communication. Here, fourth could be here, this one. Light communication. Already इसमें already जो है कई सारे काम हो रहे हैं, like you know VLC, visible light communication, right? Li-Fi, light fidelity, Harold Hash, right? An engineer from Edinburgh, professor, which has developed a technology which can communicate with the help of light. ये जो light है, with the light we can communicate. So this attosecond pulses will be very, very fast, extremely fast, can be used in the communication mode. ये भविष्य में हम इसको उपयोग कर सकते हैं दूर संचार के लिए, मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, राइट। कंप्यूटेशन में आ सकता है। दिस वन अगेन, इसका एप्लीकेशन कहां हो सकता है? एडवांस्ड कंप्यूटेशन, कंप्यूटिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वांटम। सी, क्वांटम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटम इज मेकिंग अ लॉट ऑफ हेडलाइंस। क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो कंप्यूटिंग, वहां पे इसका यूज हो सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप कोई भी नोबेल प्राइज पढ़ते हैं तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज में जिस एरिया का साइंटिफिक वर्क है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है। यू डोंट हैव टू बिकम अ साइंटिस्ट, ठीक है। आपका एम है यू आर गोइंग टू बिकम सिविल सर्वेंट, यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर। तो यू नो द बेसिक थिंग, ओके, दिस इज द एरिया ऑफ वर्क फॉर विच नोबेल कमिटी हैज गिवन द अवार्ड, एंड दिस एरिया विल हैव एप्लीकेशन इन डिफरेंट डोमेन्स। कहां उसके एप्लीकेशन होंगे? सो यूपीएससी में क्वेश्चन क्या रहेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन आ गया, सपोज द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हाट आर पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ attosecond pulses 1 2 3 4, any 1 any 3 any 4, तो को पता होता है, अच्छा ठीक है, ये मैंने पढ़ा है, I have read somewhere that attosecond pulses with the interaction with electrons and in the matter, this whole thing I have read somewhere in the Nobel Prize which has been given. So that means इसका ये potential application हो सकता है, करेक्ट। तो उस तरह से देखना है, राइट, यू रिसीव फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ये जो है, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, दिस इज द पार्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस कुड बी देयर। वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, इस एरिया पे क्वेश्चन आ सकता है। आपको पूरा साइंटिफिक कि वो पल्सेस कैसे बनता है, हाउ इट इंटरेक्ट करता है, कैसे क्या क्या होता है, उतना वो डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है, वो पार्ट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि उसका बेसिक जो पता, अच्छा एटोसेकंड 10⁻⁸ सेकंड, पल्स ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन के साथ उसका बिहेवियरल चेंज, इंटरेक्शन होता है,
और इसका हम ये सब एप्लीकेशन है, इस बात को ध्यान में रखना है। You to always look from the simplified perspective, where you know what is the area of work and the application part, right? Let me see here. हिंदी मीडियम में मैं मैडम समझा भी रहा हूँ आप, ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी समझा रहा हूँ। ये बाइलिंगुअल क्लास है, तो यहाँ पर सारे तरह के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है लक्ष्मी द्विवेदी, आई एम एड्रेसिंग टू हर, राइट। तो ये हिंदी में ही समझाया जा रहा है, तो एक्टो सेकंड और सारा जो है इसके लेवल पे ही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग से मैं समझाता जा रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं पूरा इंग्लिश बोलता हूँ। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप जैसे विद्यार्थियों को समझ में आए, ठीक है। क्या है एक्टो सेकंड? 10⁻⁸ सेकंड में है ना, ये लाइट प्रकाश का उपयोग वहां पर है, और वहां पर इस तरह की चीजें आती है, ठीक है। तो वह पार्ट ऑफ दिस, राइट। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यस। लाइट वेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यस। देयर आल्सो वी कैन यूज स्पेस टेक्नोलॉजी देयर, and a light based communication, yes, you can use that can be another application of this area, है ना। वहां भी एप्लीकेशन हो सकता है कि जहां हम सैटेलाइट हो, लाइट कम यूज करें, है ना, वहां पर उसके अध्ययन के लिए काम हो। तो ये चीज है, इसको ध्यान में रखना है। सो इफ यू सी फर्दर हियर, ये चीज है जो आप डायग्राम देख रहे हो, आप दिस वन डायग्राम, राइट। वी कैन सी हियर दिस इज अ लाइट। तो वी आर गेटिंग इनटू स्मॉलर लेवल पल्स, दिस इज पल्स, इसको पल्स बोलते हैं, दिस पल्स। और ये पल्स का जो ड्यूरेशन है, ये जो पल्स का ड्यूरेशन है 10⁻⁸ सेकंड में आता है, बहुत ही फास्ट है ये, ठीक है। बहुत सारे फास्ट यहाँ पर होते हैं, इसी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, दिस दे हैव डन देयर, और ये सेटअप किया गया है जो लैब में है, उन्होंने सेटअप करके किया है। तो उतना डेप्थ में नहीं जाना, यू डोंट हैव टू गो टू मच ऑफ डेप्थ, बट आई हैव सेड दैट कि जहां पे एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, दैट मींस ये पार्ट को ध्यान रखना है। दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये टेक्नोलॉजी का कहां पर यूज होगा, वेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस टेक्नोलॉजी, ये पार्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट देयर। Satellite also there, yes. Pankaj, you are right. Even the satellite communication based on the light and will be very very fast. We can use this technology. तो हम use कर सकते हैं। Yes, artificial eyes very good. Haridarshan Kumar has given there that artificial eyes manufacturing, yes, very good. Even for making those kind of a thing there, artificial light, where this light or eye, even eye and all this can be used there. Very true, very true. So Haridarshan Kumar, he is giving another area of application where bionic eye, sometimes bioprinting, we can use in bioprinting. So let's say, for example, if I have to write other thing here, like for example this one, bioprinting there, where we can use technology like we can develop like human tissues and organs in lab। इस पे काफी सारे काम किए जा रहे हैं, बहुत सारे इस पे काम हो रहा है कि हम वैसे जो बॉडी चाहिए, लीवर, किडनी, हार्ट एंड व्हाटएवर थिंग्स आर देयर, we can make those things in the lab by using a technology here, bioprinting. We can print them, we can use 3D printer, right। यहाँ पर हम 3D प्रिंटर यूज कर सकते हैं। 3D printer, at the same time we can combine this technology here. Let's say attosecond pulses which can be used, this technology can be used. Like one example what he has given, Harish Darshan has given, is artificial eye, bionic eye, which will be like kind of normal kind of thing can be done, ठीक है, वहाँ application है। What Pankaj has given the example that satellite, right, satellite communication जो है, today we are using radio wave, we can also make with light pulses, right, the future communication can be based on that also can be there, right, very good।
यही चीज आपको सोचना है कि द टेक्नोलॉजी फाइंड कहाँ का एप्लीकेशन हो सकता है, किस जगह पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे सैटेलाइट से स्पेस क्राफ्ट, तो वहां पर एट्रोसेकेंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। और जब आप गूगल सर्च करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एट्रोसेकेंड पल्सेस नोबेल प्राइज, यू विल गेट सो मेनी एरियाज। मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो सकता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कुड बी रन। तो उसे ब्रॉड सोचना है, यू हैव ऑलवेज थिंक इन अ ब्रॉडर डायमेंशन कि दिस इज द टेक्नोलॉजी एंड दिस एरियाज ऑफ वर्क देयर कैन बी अप्लाइड, है ना, क्योंकि ये सब एरियाज ऑफ वर्क है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, है ना, आप लोगों को जो है यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड थिंक इन दैट डायरेक्शन, दैट इज रियली गुड, वेल डन। ठीक है, तो वहां पर ध्यान रखना है। सो दैट इज वन पॉइंट विच कैन बी डन देयर। नाउ आई एम कमिंग टू अनदर नोबेल प्राइज, Nobel Prize in Chemistry, right? Nobel Prize in Chemistry 2023. 3 scientists got the Nobel Prize. Now again another very important one, quantum dots. What is it? Quantum dots. Another very important here. So Maungi Bhavandi, MIT, Louis Bruce, Columbia University, US, and then Alexei Ekimov, then again USA, for the discovery and synthesis of quantum dots. Very important one again. So if you look at Nobel Prize in Chemistry, (2023), it has been given for synthesis of quantum dots. अब ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन अगेन, एंड यूपीएससी के नाम को डायरेक्ट क्वेश्चन दे, क्यू डॉट, इसको बोलते हैं क्यू डॉट, क्वांटम डॉट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर क्वांटम डॉट्स। सी दिस इज द एरिया व्हिच गोज टू नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट? दिस लिंक्ड विद द नैनो टेक्नोलॉजी। Nano size. What is nano size? When you talk about nano size, so when you are talking about nano size, nano size क्या होता है? 10 to the minus 9 meters. हमारे बाल, हमारे hair से 10,000 times smaller, which you cannot see with naked eyes. So that is the area where quantum dots comes. And what are they? They are atoms. They are basically artificial atoms. इसको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। We make in the lab this type of quantum dots. Scientists develop this in the lab there, artificial atoms, right? इसमें बहुत सारे ये भी होते हैं, सेमी कंडक्टिंग होते हैं। और let me write another point here. They are semi-conducting atoms. यू नो सेमीकंडक्टर, है ना? सेमीकंडक्टर क्या होता है? जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इट बेसिकली प्रोड्यूस प्योर कलर ऑफ लाइट। इट प्रोड्यूसेस द दिस वन monochromatic, that means single wavelength. Quantum dot जो है red, green, yellow, blue, orange, it produces such kind of a light. Now these 3 scientists got the Nobel Prize for first time in the lab to build this kind of atoms. और आज हम quantum dots को यूज कर रहे हैं। We are using right now quantum dots. Quantum dots already has gone into market. मार्केट में आ चुका है। जो चीज 90s में किया गया, कब की बात है? More than 20 years back. The scientific research and the lab and the synthesis, which is getting Nobel Prize now,
दे सेम थिंग्स हैव मूव टू द मार्केट। आज हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, आज हम इसका उपयोग कर रहे हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन। तो पहला यूपीएससी के लिए क्या चीज जानना है कि क्वांटम डॉट होता क्या है, ठीक है, व्हाट आर क्वांटम डॉट्स, एंड देन व्हाट इज सेकंड थिंग, उसका एप्लीकेशन कहां है, क्वांटम डॉट का एप्लीकेशन कहां पर है, कहां पर हम क्वांटम डॉट को यूज कर सकते हैं, तो उस एरिया को वहां पर ध्यान रखना है। तो ये मेरे क्वांटम डॉट्स क्या चीज है, जो नोबेल प्राइज दिया गया दिस एरिया, एंड इट हैज बीन कवर्ड इन ऑल करंट अफेयर्स मटेरियल्स। जितने भी करंट अफेयर्स के मटेरियल्स हैं, ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑल मटेरियल्स, ये सब इस पे कवर किया गया क्वांटम डॉट्स पर। एंड व्हाट इज दिस एरिया, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। व्हाट इज नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेयर वी डील विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एट नैनो स्केल, 10 to the -9 मीटर्स स्केल। जब हम नैनो कण, नैनो पार्टिकल, नैनो पदार्थ, जिसका आकार या आकार जो साइज होता है कितना होता है, 10 to the -9 मीटर के बराबर होता है। जब उस लेवल पे हम रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं और कोई चीज को हम डेवलप करते हैं, तो वहां पर अति सूक्ष्म टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है। तो आई एम यूजिंग ऑल बाइलिंगुअल मोड, आई एम यूजिंग इंग्लिश ऑल्सो, हिंदी ऑल्सो, so that the students of both medium can understand what I want to convey here. So quantum dots have already gone into the market. Today, the technology which was developed in way back in 90s have now come to the market. It has now been recognized by Nobel Committee. ठीक, Nobel Committee ने इसको recognize किया, right? So quantum, now look at here, this one. You will be able to understand. अब आप देखो, आप कोर साइज, नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर, अगर आप ये देखो 2 नैनोमीटर, व्हाट इज कलर, क्या कलर है इसका, लाइट ब्लू कलर, ठीक है, लाइट ब्लू कलर, 3 नैनोमीटर, ये सब एटम्स हैं। व्हाट इज द कलर हियर, लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। फोर नैनोमीटर, so what is the color of the atoms, येलो कलर, मतलब उसका ये रंग होता है। Now if you look at this 5 nanometer, just see the size here, which color, orange color, और अगर हम if we go to the this bigger one, right, 6 nanometer size here, so here if you look at the bigger one, let's say 10 nanometer, so what color we find, red color। तो अब देखो, ये जो कलर आप जो देख रहे हो, ये सब क्वांटम डॉट्स, दैट मीन दिस सॉल्यूशन कंटेन दिस एटम्स। ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है, क्वांटम डॉट्स है, synthesized in the lab. So now you see here violet, green, blue, all the colors. And what is the size of these atoms? Nano size का. Because of the size, because nanoparticle can interact with light, because of the extremely small size, they emit color, different colors. है ना, इसके अलग अलग कलर्स। अब देखो ये कोर यहाँ पर है ना, कोर सिंबल, ये चीज वहां पर है, तो इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है। दिस आर ऑल क्वांटम डॉट, ये सब जितना भी है इसको क्वांटम डॉट्स हैं ये। All are quantum dots, and today we have started using this quantum dots. ये जो भी आप देख रहे हो atoms, these are all quantum dots, and you can see the number of atoms also there. See here 15 atoms, there are 30 atoms, there's 50 atoms, 50, ये 80 एटम्स बना हुआ है।
and here you have 150 atoms. The moment we keep on adding, but size याद रखना है, इसको हम क्वांटम डॉट, क्वांटम एटम को हम देख नहीं सकते, we cannot see with the naked eye, but they can give this color. ये जो color आप देख रहे हो, this color, they can produce this kind of pure color. So what have been developed in the lab, now it has become a reality. For that Nobel Prize has been given. It has now become a reality, right? तो यहाँ पर ये चीज है. Therapy of cancer, yes, attosecond pulses can be used for therapy of cancer. Pankaj, you are right. It can be used for therapy also there, right? You are right. ये जो part जो now quantum dots जो, and it can have various applications there, right? अगर हम इसकी application की बात करें, let's look at Nobel Prize press release. Press release में क्या दिया हुआ? Let's go into that. So if you look at Nobel Prize chemistry, इसका जो press release है, this is the press release of Nobel Prize in chemistry. Now what is given here? The name of the scientist, Babendi, Bruce and Yakimo. They are people. Now look at here. Quantum dots. What is mentioned here? I'll zoom out here. See, look. What is mentioned? Nobel Prize in chemistry rewards the discovery and development of quantum dots. मैं इसको zoom कर दे रहा हूँ. Right? Discovery and development of quantum dots. Nanoparticles. What is word here? Nanoparticles. I'll underline this word. One is this one. Right? क्या लिखा हुआ है? Nanoparticles. 10 to the minus 9 meters. Their size, see, size determines their properties. The atomic property or those properties determined by the size here. Now see, this is the smallest components of nanotechnology. See, nanotech. Now the application is given there. Now spread their light from television. Display panel जो है, an LED lamp. You know LED lamp, light emitting diode. Organic LED. Now we have QLED. क्वांटम एलईडी. ये जो पैनल है, डिजिटल बोर्ड जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, डिजिटल बोर्ड जो है, लैपटॉप के जो पैनल होते हैं, यू नो, टीवी स्क्रीन का जो पैनल होता है, डिस्प्ले स्क्रीन का जो पैनल है, उसके पीछे क्या होता है? एलईडी लाइट होता है, एलईडी पैनल जो होता है. व्हाट टाइप पैनल? एलईडी पैनल. इस बैक साइड यू हैव एलईडी लाइट्स which give that kind of a visualization which we can see. Now in the market, what is coming here? Quantum dot based QLED. The panel back side में जो LED lights होते हैं, that is the organic LED. But now that panel will be based on quantum LED, QLED. जैसे Samsung, Sony Bravia, Sony TV, that is Bravia, QLED, Samsung QLED. तो ये चीज वहां पर है, डिस्प्ले पैनल एंड ऑल दिस, टेलीविजन, एवरीथिंग, द एलईडी लैम्प. नाउ अगेन सर्जन, मेडिकल कैन गाइड सर्जन्स, सर्जरी, गाइड सर्जन्स व्हेन दे रिमूव ट्यूमर, सी कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. दिस टाइप ऑफ क्वांटम डॉट, अब इमेजिन करो कि ये क्वांटम डॉट टैग विद द सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल विच गोज टू द ट्यूमर सेल और वहां अटैच हो जाता है, इट गेट अटैच एंड रिलीजेस द काइंड ऑफ light. So let's say the doctor will take that artificial kind of a molecule with the quantum dot when it is taken inside the body, so where the cancer is growing, doctor will be able to see in the computer screen that this is the where the cancer is there, computer screen, and then through the surgery will remove the tumor, whether brain or lung, any part of the body. So that can be, that is another very potential use of quantum dots in medical science.
एंड यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन, है ना, यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है इसमें, कहाँ उसका एप्लीकेशन यहाँ पर है, अमंग मेनी अदर थिंग्स यहाँ पर है. You can see here this is what is given. Where it is given? It is a press release of Nobel Prize Committee. That is mentioned in this application part. है ना? That will the application part comes there. So that part comes. Now the question is that whether this right, and you can see here, if you go back here, look at who studies chemistry. In chemistry also quantum phenomena that can be done there. Then again you see here, this part of it, physicist, quantum effect, right? Now look at here, this given nanoparticles, chloride and all. And now आप इधर देखो, आप इस साइड में जो है, मैं इसको भी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, this one, quantum effects in particles. क्या लिखा हुआ है? लुइस ब्रुस was the first scientist in the world to prove size dependent quantum effect, for which he got the Nobel Prize. Right? Floating particle floating freely in a fluid. Then 1993, Mongi Bevandi realized the chemical production of quantum dots. तो ये जो साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है, इन्होंने लैब में क्वांटम डॉट को बनाया. That they made the quantum dots there. Then quantum dots, now see, can you see here? If you look at here, this is given here. क्या लिखा हुआ है? Quantum dots now illuminate computer monitors. जो स्क्रीन होते हैं, किससे बना हुआ है? QLED, क्वांटम LED. एंड अगेन सी टेलीविजन स्क्रीन, टीवी स्क्रीन. आज बाजार में ये टेक्नोलॉजी आ चुका है, क्वांटम LED टेक्नोलॉजी हैज ऑलरेडी ऑल्सो एड नुएंस टू लाइट ऑफ सम LED लैम्प. जो LED बल्ब होते हैं, LED बल्ब आज हम घर पे यूज करते हैं, LED लाइट, LED बल्ब वगैरह जो है, वहां भी क्वांटम का यूज हो रहा है. Quantum is coming here. Again, biochemists, doctors to map biological process tissue there. Again, you can see the same thing has been repeated here. फिर क्या लिखा हुआ है? Greatest benefit to mankind. Now, what is another thing given here? Look at here. Further thing here given, flexible electronics. ये सब मार्केट में आ चुका है. What is called foldable electronics. आपको पता है अभी सैमसंग ने भी मोबाइल लाया है. आपने देखा गैलेक्सी सीरीज ऑफ मोबाइल, फोल्डेबल मोबाइल बाजार में मिल रहा है, बहुत महंगा है, कि उसको फोल्ड कर सकते हो आप. फोल्डेबल मोबाइल, इट कैन बी फोल्डेड लाइक दिस और इट कैन बी फोल्डेड लाइक दिस. गैलेक्सी सीरीज में सैमसंग हैज ब्रॉट क्वांटम डॉट्स, राइट, क्वांटम डॉट्स एप्लीकेशन यहां पर. So then again you will see sensor, right? Thinner solar cell, see here, solar panel, solar cells. जो हम घरों पे सोलर पैनल लगाते हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब जो सोलर पैनल होता है, सोलर फोटोवोल्टाइक बोलते हैं, that could be again made of quantum dots, right? Then again see here, quantum communication, encrypted. What is encrypted? Coded, encoded. Nobody can crack it, nobody can hack it. Hack proof, है ना, जिसका हैकिंग नहीं हो सकता है ना, उसको कोई क्रैक नहीं कर सकता. क्वांटम कम्युनिकेशन, चाइना हैज ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड क्वांटम कम्युनिकेशन. तो इवन दिस विल गो टू द क्वांटम कंप्यूटेशन एंड क्वांटम कम्युनिकेशन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग. वहां इसका एप्लीकेशन है, राइट? दे विल सी हियर. सो थिंग्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसका एप्लीकेशन आज हो रहा है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम, राइट? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ. व्हाट आई एम नाउ डिस्कसिंग राइट नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दैट्स व्हाट कम्स इनटू दैट, दिस क्वांटम डॉट्स, राइट? नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, सी दीज आर आर्टिफिशियल क्रिएटेड इन द लैब. Now I am asking a very important question. Do quantum dots exist naturally? क्या quantum dots नेचर में भी पाया जाता है? क्या ये प्रकृति में भी पाया जाता है, या ये केवल हम लैब में आर्टिफिशियली बनाते हैं?
नो समटाइम जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हेन यूपीएससी विल आस्क क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, तो वहां पर ये होगा कि एग्जिस्ट इन नेचर और इट इज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इन द लैब। व्हाट इज योर आंसर? आपका जवाब क्या है? आई एम लुकिंग एट योर चैट बॉक्स। क्या क्वांटम डॉट्स नेचुरली एग्जिस्ट होता है या केवल इसको लैब में बनाया जाता है, आर्टिफिशियल सिंथेसाइज? डू क्वांटम डॉट्स एग्जिस्ट इन नेचर और they are synthesized in the lab? That's my question, right? So let me see here. Good, Lakshmi has given, well, Lakshmi has given the answer. What about other students, right? बाकी लोग जो है उसका जवाब, क्या ये नेचर में एग्जिस्ट करता है ऐसे एटम्स, या केवल ये लैब में बनाया जाता है? जो अलग अलग कलर जो है, जो आप देख रहे हो कलर्स, अगर नेचर में है, अगर नेचर में अवेलेबल है तो उसका एग्जाम्पल क्या है? व्हाट आर एग्जाम्पल? लक्ष्मी, अगर नेचर में है तो उसका उदाहरण क्या है, उसका क्या उदाहरण है? पंकज, अगर नेचर में एग्जिस्ट करता है क्वांटम डॉट्स तो उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? Yes, Shivraj, you are right. Nature has quantum dots, those kind of atoms are there. Can you give me example? क्या आप उदाहरण दे सकते हैं? Can you give me examples of such kind of molecules there, such kind of atoms there? Yes, Shivraj, Pankaj, Pankaj, nanomaterials of carbon family is all right, but give me some kind of examples there. आप सर्च करो, you find it out, tell me. कि वहां पर है कि नहीं? मैं आपको हिंट देता हूं, लुक एट हियर, नोबेल कमिटी हैज ऑलरेडी गिवन हियर एग्जांपल, लुक एट हियर दिस, ये नोबेल कमिटी का कहना है, अर्ली 1980s, सी हियर दिस, अर्ली 1980s, this scientist Alexei Yakimov, the Nobel Prize winner, succeeded in creating size-dependent quantum effect in colored glass. Glass में किया. The color came from nanoparticle of copper chloride. ग्लास में किया था. Now look at it. मैं फर्दर दिखा रहा हूँ किसके लिए इसको अवार्ड दिया गया है. अब now see here. A few years later, अब यहाँ पर देखो, a few years later, Louis Bruce was the first scientist in the world to prove size-dependent quantum effect in particles floating freely in a fluid. उन्होंने solution statement दिखाया. Size-dependent quantum effects in particles floating freely in a fluid. What is fluid? Fluid क्या होता है? Liquid और gas होता है. उस पर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, है ना. और ये जो तीसरा साइंटिस्ट है 1993, मुंगी बेबेंदी, इन्होंने क्या किया? दिस प्रोड्यूस्ड इन द लैब, प्रोडक्शन किया इसका, he made in the lab, right? Okay, yes. UV light hits quantum dots and emit various colors. Yes, Pankaj, you are right there. और लक्ष्मी ने जवाब दिया है, जैसे एयर में कुछ ऐसे कण भी होते हैं जिसमें हम आसानी से नहीं देख सकते हैं. ठीक है, ये भी सही है. लक्ष्मी भी ने भी जवाब दिया है, लिक्विड वगैरह वहां पर है, वहां भी है, बिल्कुल सही है. ये पार्ट है, नेचर में आता है. कई बार होता है एरोसोल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं. If we take the natural part of it here, this, if we talk about this atoms, ये जो क्वांटम डॉट्स जो, क्वांटम डॉट जो है, क्वांटम डॉट जो है, इसका अगर हम प्रकृति का देखें, नेचुरल हम देखें, नेचर, राइट, यहां पर ये चीज होता है एरोसोल.
जो कि नैनो साइज का है। मैं और एग्जांपल देता हूं, एक और अच्छे एग्जांपल में। बायोलॉजिकल सिस्टम में हूं, जैसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, कैमिलियन। कैमिलियन, गिरगिट, गिरगिट जो उसके स्किन होते हैं, कलर चेंज होता है ना, कैमोफ्लाज बोलते हैं ना, कैमोफ्लाज। दे हाइड इन द बैकग्राउंड। आपने देखा होगा कुछ तरह के एनिमल्स होते हैं, उसका जो कलर वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चेंज कर लेते हैं। समटाइम बटरफ्लाई, insect, right? So that color, what is quantum dot? That color, the small size there, right? Small size होता है। You are even seen the eyes of the certain insect वगैरह जो होते हैं। They use such nano chips. See, nano, although today we talk in terms of artificial synthesis, लेकिन nature also has nanoparticles there, right? So those insects which may have that, sometimes birds, आपने देखा होगा कलर वगैरह, फेदर, पैरेट और द बर्ड का जो कलर होता है, you've seen that parakeet, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर जो होता है, नेचर हैज गॉट दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना। अमीबा में जैसे लिक्विड चेंज वहां पर ठीक है, इवन ऑक्टोपस आल्सो चेंज देयर कलर, यस, प्रतीक्षा हैज गिवन दैट। तो नेचर हैज सच काइंड ऑफ थिंग, एरोसोल में होता है, समटाइम्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स, व्हाट इज इट, सस्पेंडेड? they were initially discovered, पहले इसको खोज किया गया। इवन यू नो दैट वाटर, sea and ocean, those kind of particles would be there which have that kind of color. What quantum dot gives? Color. Particle, see what is quantum effect? The particle, the size has interaction with light, quantum effect, that light behavior, प्रकाश के साथ जो बिहेवियर है किस पे डिपेंड करता है? उस कण के आकार पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द एटम। इवन वी हैव इन द नेचर, एंड दिस वाज डिस्कवर्ड, सी इट वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड in nature. At the same time, right, it is artificially made, man-made. वैज्ञानिकों ने इसको बना कर दिखाया कि हम इसको बना सकते हैं लैब। They did that in the lab, है ना। For this purpose, Nobel Prize has been given. इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया, राइट। ओके, माइक
माइक में कोई इशू आ रहा है? ऑलराइट, अभी आवाज आ रही है? Okay, can you hear me now? There's some voice problem is there. अभी ये आवाज आ रही है? अभी can you hear me right now? अभी मेरी आवाज आ रही है सही से या I need to change my battery? नहीं आ रही ठीक से? अभी आवाज ठीक आ रही है? अभी आवाज ठीक आ रही है? Now I think I am audible, right? Now the voice is better. So I have changed the battery. मैंने battery change किया है. I think with the battery change, you are able to hear me now properly. अब मेरी आवाज सही से आ रही है आप लोगों को? Are you able to hear right now? Just respond me in the chat box. तो मैं आपका chat box देख रहा हूँ. So if there, yes, clear there. Okay. So I have changed the battery there. मैंने battery अभी just change किया है. So if you have anywhere the problem with the voice, please let me know. ठीक है? तो उसको लैब में भी हम सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है? नॉइज वो आ रहा है इससे बाहर से, बिकॉज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, लाइक चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर आउटसाइड इन द पार्क, so that the children's voice is coming to my room. I am doing it from my home. That's what the sound of children is coming from outside. आवाज के साथ बफरिंग हो रही है. Okay. अभी आवाज ठीक है? Am I now audible? अभी आवाज ठीक है इस टाइम पे? मैंने बैटरी चेंज किया है. अभी बफरिंग आ रही है या एवरीथिंग इज ओके देयर? चल हम जैसे बारिश समझम होती है. ठीक है, अभी आवाज ठीक है या अभी बफरिंग है? Now it's all right. Sound is all right there. I have changed the battery there. Okay. So let us now go into that. So quantum dots, right? Quantum dots here. So that part comes into that. So let me come to the quantum dots application. I teach in many places there. Somebody called Penguin, a fake name, is asking that whether it is there. So that part of there, right? So, but I am teaching only environment there, not any other. So in SRIS classes, I am teaching only environment right now. Right now, only the environment module is going on, no science and technology. ठीक है? तो वहाँ पर मैं भी केवल environment का module इस टाइम पे ले रहा हूँ. That's the 12 days classes are there, कुछ वहाँ पर. ठीक है? So now let's go to this one. अभी जो मैंने बताया quantum dots application part. Now this becomes important for the exam, where you should know the application part of it. Now let me give you the part of it. The first application was QLED,
quantum LED. Now this is used in display panel. Mobile phone screen. All this has come into that from right display screen is there. Then computer monitor. Right, at the same time, you have any kind of a display panel and all given here, digital board or device. Like I'll give you example here. Even TV also there. I'll use the board here. TV also there. Even it is now getting into the TV also there. Like for example, if you take example here, this QLED TV by Samsung. Then Sony. They very high level of visual clarity is there. I'll show you the. If you look at Bravia, the QLED TV, they have very high level of kind of high definition standard. High definition. Yes. TV comes here. Look at here, Sony TV here. This one. 4K ultra high definition. These are the already in the market. Like Sony Bravia. Find this type of screen which has come up. And again you can see here. This is the it's all there in the market. You will see here, this is the market. Very high definition, ultra high definition. What is there in the market? 4K resolution and all, you will find it. Samsung, which is has come out with this kind of TV. Already that it comes in the market. It has already gone into the market. So you'll find here all those kind of systems there. See here further. You'll see this. From organic LED it has gone to QLED. Already been in the market, right? There's a small. So that's what comes into this part of it. You'll find all this part of it there. Then you will see here. So what comes here? This first. Second here, this one. Foldable electronics, like for example, Samsung has got this foldable mobile phone. Galaxy 3, right? If you look at this one, this already has come in the market. This foldable, I'll show you this right now. This foldable mobile, which is a costly mobile, but this already now in the market. And they have two models. One is horizontal and the second vertical. This one. Again, it is based on QLED. And if you look at the image, Again, the screen, what you see, they are made of Q dot, quantum dot. The quantum dot has come into this. Whatever we use in day-to-day life, जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, that what you come across this devices have come in the market. Already quantum dot application part, and you can see this fold 4 is another one. Right, again you can see this one. It's already been there. Now this is another one. iPad, tab, whatever. ये सब आ चुके हैं. It has come in the market. So again, you'll find this application for foldable electronics. Then here this one. Solar panel.
Then you know that LED bulb and the lamp, right? LED bulb and lamp there, right? That part principle. So all those kind of things have now moved to the market. Then again, what could be there? There's nano sensors for medical diagnosis. That again we can use for quantum medical diagnosis. Like for example, I'll give you example here, biosensor to detect tumor. Scientists can use, doctor can use sensors to detect a tumor, cancer. Those molecules tagged with quantum dots. Imagine that this is the molecule and it has been tagged with quantum dots. You have a Q dot. And when it goes to the cancer cell, tumor cell, it just goes and binds and give out the color. एंड वो जगह अटैच हो जाएगी. जो कलर होगा तो कलर से पता चलेगा कहां पर वो ट्यूमर ग्रो कर रहा है, where the tumor is growing in the inside the body. There could be used in medical diagnosis, healthcare, and in terms of biotechnology, it has application for, right? Quantum dot can play a very important role. Solar panel I have already mentioned there. Again, where it can be used, another application here of this quantum dot application, that could be, I'm writing here the sixth one, this one. Quantum communication. I'll give you example here. China has demonstrated, has already demonstrated there's a quantum communication in the space level, that means using a satellite. The name of the satellite is Meteus. Is named after ancient Chinese philosopher. China built a satellite. China, what they did, built a satellite. China ने एक satellite बनाया, Meteus. ठीक है? And then used this two places in China. They used quantum. जैसे हम normal satellite communication करते हैं. We use ultra high frequency radio waves. China used the light. Light is the mode there. So here, this one, this Meteus satellite, the name is satellite. And then this pulse of the light, which went from one place to another. And it was an encrypted message. That means totally encrypted. The normal communication what we have, they can be hacked. Cyber security can be a problem. But here the light waves, quanta, are all secured. Quantum gateway cannot be easily hacked or intercepted. This what China has already carried out 5 years back. चीन ने ये कर दिया, चीन ने ये करके दिखाया है. चाइना ने है ना पहले से ही इस तरह का सैटेलाइट बनाकर इस एक्सपेरिमेंट को कर चुका है. ठीक है, तो फ्यूचर में इंडिया को भी करना होगा. We have to also go into this kind of technology there, where the quantum dots can play important. So here, quantum communication, that is all part of China. China did that. The part of this, and at the same time, this will also find application where quantum computing. अब जैसे कि Google has a quantum computing is based on what? Qubit, quantum bits of information. Like for example, Google, even China has done, the Google company, Google Sycamore, they have developed a processor Sycamore. Santa Barbara lab of Google company, they developed a quantum processor called Sycamore.
एंड दे हैव ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड क्वांटम सुप्रीमेसी। उन्होंने क्वांटम सुप्रीमेसी करके दिखाया है, ऑलरेडी उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर को बना दिया है, और उन्होंने क्वांटम लेवल पे कैलकुलेशन, एक्सट्रीमली फास्ट कैलकुलेशन यूजिंग क्वांटम बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्यूबिट्स, वो करके दिखाया है, ऑलरेडी बीन डन देयर, राइट। अगेन केमिकल अंडरस्टैंडिंग, hundreds of applications. Quantum dots can find application space, astronomy, biotechnology, material science, nanotechnology, quantum, defense, even defense technology, weapon. Imagine करो color changing polymers, एक ऐसा मिसाइल जहां कोटिंग की गई है, quantum dot coating is there and has the same effect like a camouflage, जिसको इजिली हम देख नहीं सकते, कैमोफ्लेज, इनविजिबल। DRDO is working to that technology. ऐसा मटेरियल made of such kind of nanoparticles which has that invisible nature, जिसको हम देख नहीं सकते, सच मिसाइल, रॉकेट, फाइटर जेट, उसकी जो बॉडी जो बनी हुई है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया गिरगिट, कलर चेंजिंग पॉलीमर्स, देयर द क्वांटम डॉट्स कैन प्ले वेरी रोल, दैट कुड बी द पार्ट ऑफ इट, तो वहां पर उसका एप्लीकेशन हो सकता है। क्वांटम AI टेक्नोलॉजी, यस, दैट इज आल्सो अनदर थिंग वी कैन यूज दैट इन द फ्यूचर पार्ट। इफ वी टेक हियर we can again go for quantum artificial, any computation part. Remember that there's again any kind of computation part, whether it is used in AI system, artificial intelligence system, or you take any kind of a system there. Defense, I mentioned the defense. Color changing polymers. Color changing polymers, right? Right, as a coating, as a surface coating of the material, as a coating on, let's say, missile, rocket, right, fighter jet, helicopter. So defense application could be there. Right, disturbance, that could be the part of it. My voice is audible, or does it have any kind of problem still there? Yeah, my voice is audible there, or do you have any kind of issue in terms of part of it? Voice ठीक है या कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है? प्रतीक्षा, even now the disturbance is there. Is there any more disturbance there? Noise is continuing. Okay, let me check it out there. Let me check it out. What about this now, the sound? अभी साउंड कैसा है? I have just tried to change the battery again. Now can you confirm me the sound? I'm looking at the chat box there. अभी साउंड कैसा है? Better there? तो ठीक है, अब मुझे बताते जाना. I will be able to see your messages there. अभी साउंड ठीक है? Better there. Okay. So what I'm saying that
quantum dots can play multiple roles. We can have hundreds of applications of quantum dots. You know, we can have so many applications there. So now let's go to the third Nobel Prize. Third Nobel Prize, this medicine and physiology. Right, Kathleen Carrico, right, Kathleen Carrico and Drew Wiseman. One male scientist, another female scientist. Nobel Prize in Medicine Physiology 2023 was given for this one, nucleoside based modification that available in the developed mRNA vaccine. So Nobel Prize in Medicine, right, in medicine or physiology, okay, that is given for development of messenger RNA, mRNA vaccine. And particularly, you know that COVID-19. So mRNA vaccine, ये जो vaccine for COVID, then Nobel Prize was given. So another thing, if you look at from biotechnology point of view, this becomes really better there. Right, biotechnology point of view, it becomes very important. So messenger RNA vaccine, mRNA vaccine given to Kathleen Carrico, then Drew Wiseman for the discoveries concerning the nucleoside base modification, modifying the nucleoside ATCG, adenine, thymine, cytosine, guanine, uracil. Uracil is found in RNA, right, to enable development of effective mRNA vaccine against COVID-19. So what is very important here, when you say about nucleoside, right, nucleoside, what is nucleoside? These are nitrogenous bases. Nitrogenous bases are there, right? And where do you find here? What is being made of? Nucleic acid. Nucleic acid is made of nucleoside, and you know there two are there. Yesterday, the previous class also I mentioned RNA and DNA. So ribonucleic acid made of A, U, C, and G. Adenine, uracil, cytosine, guanine. And DNA, deoxyribonucleic acid, is made of A, T, C, G. Adenine, thymine, cytosine, guanine. यहाँ पे क्या होता है? A has bond with U and C has 3 hydrogen bond with G. वो inner bond होता है. जबकि यहाँ पर A has T and C has got with G. DNA and RNA, this nucleic acid, they're made of this kind of nucleoside. So what these scientists did, they developed technology for modification of nucleoside. इनको नोबेल प्राइज इसलिए दिया गया कि they developed the method to modify nucleoside bases. उन्होंने एक तरीका निकाला जिससे कि ऐसे जो AUCG या ATCG जो है उसको मॉडिफाई किया जा सके, उसको बदला जा सके, और उससे इफेक्टिव मैसेंजर RNA वैक्सीन वाज डेवलप्ड. So this basically helped in development of effective प्रभावशाली मैसेंजर RNA वैक्सीन को विकसित करने में इसे सहायता मिला फॉर COVID-19. अगर इन्होंने ये मेथड नहीं डेवलप किया हो तो लैब में न्यूक्लियोसाइड को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, तो ये जो पर्टिकुलरली जो mRNA वैक्सीन को बेटर तरह से डेवलप करने में वो पॉसिबल नहीं हो पाता. इनके टेक्नोलॉजी या इनके जो मेथड से साइंटिस्ट ने लैब में है ना आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया mRNA वैक्सीन फॉर COVID-19. तो उसके रिकॉग्निशन में दिस टू साइंटिस्ट Carrico एंड Wiseman both were given the Nobel Prize in Medicine 2023. Right?
दे वर गिवन दिस अवार्ड, उसके लिए उनको पुरस्कृत किया गया, उनको ये पुरस्कार दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, mRNA, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, है ना, यहाँ पर जो है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के यहाँ पर। तो यहाँ पे जो जनरली जो कोविड-19 के जो है स्पाइक प्रोटीन जो होता है, ठीक है, स्पाइक प्रोटीन, तो इसको समझना है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हियर। तो ऐसा चीज है, आपको समझो, आप ये जो मैंने यहाँ बताया यहाँ पर, ये ऐसा होता है। नाउ लुक एट हियर दिस, जो कोविड-19 है, कोविड-19 जो वायरस है, इसके ऊपर ये प्रोटीन है, क्राउन जैसा दिखता है, जैसे आपने देखा वो राजा का मुकुट होता है, क्राउन उसमें जैसे बने होते हैं, तो वैसे ही प्रोटीन्स होते हैं। सरफेस एंटीजन, मैंने डिजीज वाले सेशन में मैंने बताया था कि सरफेस एंटीजन होते हैं, है ना, दिस व्हाट वी कॉल क्राउन प्रोटीन देयर। नाउ व्हाट कम्स हियर, ये जो उसको बनाने के लिए जो नैनो पार्टिकल्स को बनाया गया, लिपिड नैनो पार्टिकल्स, उसको लैब में सिंथेसाइज किया गया। अगेन यू सी नैनो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको लैब में बनाया गया सब, और फिर इससे प्रोटीन को ट्रांसलेट किया गया, है ना, सेल के अंदर जो है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा ये चीज है कि कैसे बनाया गया ये चीज है। ये जो मैकेनिज्म है, you'll be able to understand। यहां पर ये चीज है, उन्होंने लैब में क्या किया, व्हाट दे डिड इन द लैब, कि ये जो वायरस है, दिस इज कोविड वायरस, कोविड-19 से एक्चुअल वायरस, तो उसके जो ऊपर जो ये स्पाइक प्रोटीन होता है, व्हाट इज दिस वन, these are spike proteins। उस प्रोटीन को यहां पर लिपिड नैनो पार्टिकल यूज किया गया, जिसमें ये जो आरएनए है, हमेशा याद रखना है, कोई भी जो स्पाइक प्रोटीन होता है, दिस वन और दिस स्पाइक प्रोटीन, द इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज इन द आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसको लैब में जो बनाया गया, ये जो है जो इसको कवर किया गया है, दिस इज द लिपिड, ये लिपिड का बना हुआ, दिस फैटी एसिड लिपिड नैनो पार्टिकल यूज किया गया, एंड दिस पर्टिकुलर आरएनए, दिस इज सिंथेसाइज्ड इन द लैब, ना, इसको आर्टिफिशियली बनाया गया। It was artificially synthesized in lab। और फिर क्या किया गया, इसको इन्फेक्ट किया गया सेल से, ह्यूमन सेल। जब ये ह्यूमन सेल में जाएगा, राइट, तो क्या होगा, ये आरएनए जो है, दिस आरएनए ऑफ द वायरस will go inside the cell, and the cell will, there's something called translation। What is translation? Where the cell, their transfer RNA will read the message on the RNA and will make that protein with the help of राइबोसोम, है, राइबोसोम के हेल्प पे। तो नाउ दिस प्रोटीन आर देयर, जिसको बनाया गया, सेल विल मेक द स्पाइक प्रोटीन, ये स्पाइक प्रोटीन बनाया गया। अब उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी को तैयार, व्हाट इज एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय WBC, आवर इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम का WBC है, जब वो देखता है एंटीजन को, यानी कि वायरस के जो सरफेस प्रोटीन देखता है, जैसे यहाँ पर कोविड केस में स्पाइक प्रोटीन, तो हमारा बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट। तो जो वैक्सीन, जो mRNA वैक्सीन होता है, ये जो मैकेनिज्म जो बनाया गया, इससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट मीन इम्यून सिस्टम जो है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम विल रिकॉग्नाइज इट। क्या रिकॉग्नाइज करेगा, स्पाइक प्रोटीन। ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ये जो वायरस का स्पाइक प्रोटीन है, दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ एंटीजन, and that makes our WBC to prepare antibodies against the spike protein। एंटीबॉडी कौन बना रहा है, ह्यूमन बॉडी बन रहा है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी का, इनसाइड ह्यूमन बॉडी।
कौन बनाता है एंटीबॉडी? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट बोलते हैं। अब वो किसके अगेंस्ट बना रहा है? स्पाइक प्रोटीन। तो पहले हमें सेल के अंदर स्पाइक प्रोटीन को बनाना पड़ेगा। वो हम किसके थ्रू बना रहे हैं? मैसेंजर आरएनए, mRNA, मैसेंजर आरएनए, mRNA। और इसको हमने कहां बनाया? लैब में। ठीक है, तो यहां पर ये समझना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि mRNA वैक्सीन कैसे काम करता है, इसका तरीका ये चीज है। लेकिन एक्सप्लेन किया, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है, तो जो मैसेंजर आरएनए जो होते हैं, mRNA जो वैक्सीन होते हैं, right? I'll give you example here. Worldwide developed, Moderna is developed. So what scientists have done? COVID-19 का जो है, they took the spike protein, अब ये जो स्पाइक प्रोटीन है उसका मैसेंजर आरएनए जो इंफॉर्मेशन, यानी कि उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इस प्रोटीन को बनाने के लिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको लैब में बनाया गया। They synthesized in the lab. It was artificial made in the lab. ठीक है, फिर इसमें क्या किया गया? दिस mRNA जो है, तो इसको पैक किया गया काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ये वायरस नहीं है, ये जो बाहर का है ये लिपिड से नैनो पार्टिकल से इसको बनाया गया। यू कैन से इट इज अ नैनो कैप्सूल। नाउ हियर दिस mRNA कोड फॉर स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन है। नाउ दिस इज एडेड टू द वैक्सीन, ये वैक्सीन बन जाता है। तो जो वैक्सीन बनता है उसमें क्या चीज है? ये चीज है। क्या यहां पर है? ये आर्टिफिशियली लैब में नैनो कैप्सूल बनाया गया है, उसके अंदर जो मैसेंजर आरएनए है उसमें जानकारी क्या चीज का है? स्पाइक प्रोटीन का है। और ये स्पाइक प्रोटीन कहां से आ रहा है? कोविड-19 का। ठीक, उसी तरह यहां पर दूसरा जो स्पाइक प्रोटीन 1, 2, 3 जितने भी है, ऑल दिस mRNA विल बी देयर, उसको वैक्सीन ऐड करिए। अब इमेजिन करो कि ये जो वैक्सीन है, दिस वैक्सीन contain this all this। अब ये अलग अलग स्पाइक प्रोटीन हो सकता है। स्पाइक प्रोटीन 1 mRNA, स्पाइक प्रोटीन 2 another one। So scientists they synthesize for different spike protein, उसके अलग अलग mRNA होंगे। अब जैसे ये जो है इसका mRNA ये है, दूसरे का mRNA अलग होगा, third will have different mRNA, all the genetic information, and all are packed into this kind of a nano capsule, and that is added in the vaccine। तो जब इसको इंजेक्ट किया जाता है, when it is injected in the human body, है ना, जब इसको इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्टेड देयर, तो व्हाट विल हैपन देयर? ये जो बॉडी के अंदर जाता है, सेल के अंदर, नाउ दिस पार्टिकल्स ये जो है, when it goes inside the human body, so what happen? Our cell synthesize spike proteins। जब हम उसको लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं, when you take that vaccine has contained this kind of molecules। So our cell, our human cell, based on the messenger RNA here, will make inside the body spike proteins। यानी कि बॉडी के अंदर क्या बन रहा है? स्पाइक प्रोटीन बन रहा है। हमारा सेल क्या बना रहा है?
स्पाइक प्रोटीन बना रहे हैं, वायरस नहीं है, रिमेंबर दैट, वायरस नहीं है, वायरस का स्पाइक प्रोटीन्स को हमारे सेल्स के द्वारा बनाया जा रहा है। जब हम इंजेक्ट करते हैं तो जब वो जाएगा, ये चीज जब अंदर जाएगा बॉडी के अंदर, तो सेल के अंदर जाके वो जब जब mRNA के थ्रू जो हमारे सेल का जो मशीनरी है विल मेक दोस काइंड ऑफ स्पाइक प्रोटीन्स। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स will see that spike protein and will make antibodies। ठीक है, जब स्पाइक प्रोटीन बन जाता है तो हमारा WBC क्या करेगा, ट्रिगर, WBC ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा और एंटीबॉडी बनाना चालू करेगा। अब यही जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में बन गया है, अब एक्चुअल अब सोचो कि फ्यूचर में रियल वायरस एंटर्स, अब कोरोना वायरस एंटर हो गया, नाउ द कोविड वायरस एंटर द बॉडी, तो क्या होगा उस केस में, व्हाट विल हैपन इन दैट केस, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन चुका है, वी ऑलरेडी हैव एंटीबॉडीज देयर, नाउ दिस एंटीबॉडी विल माउंट अटैक on the real virus, when the real virus will get inside, that will be attacked by the antibodies and the virus will be destroyed। ठीक है, तो you understood that सेल के अंदर जब जाएगा, cell will synthesize spike proteins, and now this spike proteins, remember that this spike proteins will trigger immune response, right, where WBCs, white blood cells, will make specific antibodies, will prepare specific antibodies, वो बनाएगा। तो जब हमें कभी भी एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो ये एंटीबॉडीज क्या करेगा, वायरस से फाइट करके वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये मैकेनिज्म होता है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ mRNA वैक्सीन व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। नाउ फॉर दिस पर्पस दे गॉट द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज वाज गिवन, है ना, इस पर्पस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, राइट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हियर? Are you able to understand? I am looking into your chat box here. Right. So I'm just seeing your chat box, right? Any doubt you have? Anything what you want? Anything you want to just have anything aspect of that? ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? Right? Yes, T cells can be asked in the exam. Yes, it can be asked. It can be asked in the exam. T cells can be asked. Oh, yes, right. Manish, you are right. वो मेरे टी शर्ट से टकरा रहा है इसलिए वो बार बार ये मरबर आवाज आ रहे हैं वहां पर। That could be the possibility. Yes. I think you are able to understand. जो आज मैंने समझाया है, that what I have explained right now, है ना, ये पढ़ जो ये चीज समझ में आना चाहिए। इसके लिए जो है that the Nobel Prize has been given to this part. Mechanism of messenger RNA and this comes medicine there. And these are two scientists who got the Kathleen Carrico and Drew Weissman. They got the Nobel Prize for this messenger RNA. So now if you look at here this one, what I have explained here. अब मैं इसका नोबेल प्राइज का जो वेबसाइट है, if you go to the for Nobel Prize this one press release, I am just taking that press release here. Look at here. So this is the given by Nobel Committee for the discoveries concerning nucleoside based modification that enable the development of effective messenger RNA vaccine against COVID-19. And you can see here, when you go down, it has explained the vaccine before pandemic, and then now see, एक होता है recombinant protein, we are using recombinant protein. वैक्सीन कई तरह के होते हैं, वैक्सीन कितने
एक होता है जहां पे डेड वायरस इज यूज, वीक फॉर्म ऑफ वायरस यूज, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोवैक्सीन, भारत बायोटेक हैज डेवलप्ड कोवैक्सीन with ICMR support. So that is the weakened form of inactivated virus. We are taking directly the virus which is weakened or inactivated. There is one type of vaccine which this Indian company Bharat Biotech Covaxin was based on that. Second type of vaccine is called recombinant protein. There is a spike protein and they use viral vector. Viral vector होता है. On the vector you have all this spike proteins of the COVID-19 added on the surface of the viral vector. Like for example here adenovirus. What is very important here? Adenovirus which is added there. तो ये जो है इसको बोलते हैं recombinant vaccine बोलते हैं. What we call it is a recombinant vaccine. We call it the recombinant vaccine. ठीक है? क्या होता है recombinant vaccine? recombinant vaccine में वहां पर हम ये यूज करते हैं, right? In recombinant vaccine we have a vector जैसे adenovirus which infect human cells, and that adenovirus on the surface has the proteins of spike proteins of COVID-19 which we have prepared through genetic engineering, recombinant DNA technology. So this kind of vaccine is called recombinant vaccine. Okay? And the third type of vaccine is mRNA vaccine, messenger RNA vaccine. Right? That is what is given here. mRNA vaccine, promising idea. ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पर this method which they have developed, the breakthrough what they have done there, this modification part, which developed the mRNA where in the lab for the spike protein, and we directly take mRNA inside the body, which make our cell to make spike protein inside the body, and that trigger our immune response to fight against the actual virus. तो वहां पर ये चीज है. थर्ड टाइप यहाँ पर. So that means we can simply summarize here. हम इसको इस तरह summarize कर सकते हैं. There's three types of. See, I'll use this one. 3 types of vaccine. और ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था. First is this one. Or inactivated virus, they're killed virus that we put in the vial, right, and this we take as a vaccine. Second is the recombinant, right, recombinant vaccine. What is recombinant vaccine? This vaccine contains a viral vector carrier होते, viral vector with surface proteins of virus. This is a COVID-19 virus. That means this is basically a vector. जैसे for adenovirus, not COVID virus, adenovirus. And on this you have a spike protein. Spike proteins of COVID-19 that is added. तो इसको बनाया जाता है मेड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग. दैट इज यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कोविशील्ड. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे हैज डेवलप्ड दिस type of vaccine with the help of Oxford, that is AstraZeneca as a company collaborated with Serum Institute of India Pune to develop the Covishield. That was based on this one, recombinant DNA technology. See, whenever the word recombinant comes, that is the genetic engineering, and then it is modified on the viral vector. And what is third type? Third type is this one, mRNA vaccine. Messenger RNA vaccine.
Now, what is messenger RNA vaccine? Here, use of mRNA of COVID-19 spike proteins. As vaccine. Now, this will synthesize spike proteins by cells of the body, cells of human body. जो मैंने भी समझाया। तो यहां जो एग्जांपल है, दिस एग्जांपल कोवैक्सीन, भारत बायोटेक, and ICMR. Here the example, you can take this example, right? This example you can take here, that is a Covishield. That is Serum Institute of India. Right? And this one, mRNA, this is Moderna. American company, this is Moderna comes into this. Even Sputnik also comes in same thing. Only difference is that in case of AstraZeneca and Serum Institute of India, Covishield, it uses the chimpanzee kind of adenovirus as a vector. But in Russia's Sputnik, it uses actual adenovirus, human adenovirus as vector. ये अंतर है। जो स्पुतनिक लाया गया था उसमें और कोविशील्ड में यही अंतर है कि कोविशील्ड में जो वेक्टर था वो चिंपैंजी एडिनोवायरस था, जो कि स्पाइक प्रोटीन को कैरी कर रहा था, जबकि रशिया के स्पुतनिक में वहां जो वायरल वेक्टर यूज किया था वो भी एडिनोवायरस था, जो कि एक्चुअली ह्यूमन एडिनोवायरस था, जिसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोविड ऐड कर दिया गया। और मोडर्ना का जैसे एमआरएनए का वैक्सीन, राइट, क्लियर है यहां पर? राइट, दैट पार्ट कम्स इनटू दिस, राइट। तो ये चीज को ध्यान में रखना, जो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं, ये पार्ट को आपको ध्यान में रखना है। नोबेल प्राइज आई एम टेकिंग एज अ बेस, मैंने नोबेल प्राइज को एक बेस बनाया है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को मैं समझाते जा रहा हूँ। तो आज के सेशन में मैंने तीनों नोबेल प्राइज को कवर किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिकल साइंस, मेडिसिन और फिजियोलॉजी। तो ये तीनों एरिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम क्वेश्चन, वेरी गुड ग्रेट क्वेश्चन, राइट। So we'll stop the session here, ठीक है, and tomorrow will be the last session, है ना। नेक्स्ट जो 5th सेशन होंगे वो लास्ट होगा, उसमें भी मैं कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा, नए टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें कई सारे नए टेक्नोलॉजीज जो होंगे, जैसे हाइपरलूप क्या है, एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है, ठीक है, तो वो सारे एरियाज को कवर करेंगे विच इज नाउ इमर्जिंग। स्पेस एलिवेटर क्या है, ये सब हम लोग जो 5th वीडियो है वहां पर ये सारे टॉपिक्स होंगे, राइट। सो इन द 5th वीडियो, दैट इज द लास्ट ऑफ दिस सीरीज, देयर विल बी अनदर important session on very important development of new technologies, emerging technologies which are now making headlines, and again you could get questions on that. I will be covering to those areas. It will have several areas of technologies combined into one, ठीक, बहुत सारे टेक्नोलॉजी एरिया को कंबाइन करके जो ऐसे चर्चा का विषय रहा है, जो करंट में रहा है और न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि नोबेल प्राइज को एक बेस बना के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो ऐसे टॉपिक्स हैं उसको एक्सप्लेन करना, समझाना, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है ये मेरे बुक में दिया हुआ है, दिस माय साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक फ्रॉम ओक ब्रिज पब्लिकेशन, राइट।
There is a Science and Technology from Inception to Advancement, that by Oakbridge Publication. अगर आपके पास ये किताब है तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें दिया हुआ है, मैंने ये वैक्सीन भी दे रखा है, क्वांटम डॉट भी दिया हुआ है, ठीक। क्वांटम डॉट अभी लास्ट ईयर अभी न्यूज में आया जो दिया गया, इस बुक में पहले से ही कवर किया हुआ है। इस बुक में ऐसे सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो कि जहां आप यूपीएससी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते। दिस बुक हैज बीन प्रिपेयर्ड विद लॉट ऑफ रिसर्च, right? And I've tried to give all those topics which are not only last 5-6 years, but also the emerging areas which could be asked in future exams, in the prelims exam that is given. And there's a third updated edition of the book with the solved question at the end of every chapter, and at the end of the book you have the part of it. ये आप Amazon या Flipkart से आप ऑर्डर कर सकते हैं, वहां से भी आपको मिल जाएगा, from Oakbridge Publication, and also major bookstore in India they have got this. That part is there. So there you can follow this Oakbridge Publication, right? So we'll stop here and we'll meet in the last session. Any doubt you have? थोड़ा बहुत वॉइस का प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, नेक्स्ट सेशन में ये प्रॉब्लम ना आए। एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मुझे बहुत खुशी है। हाँ लक्ष्मी, थैंक यू लक्ष्मी फॉर योर प्रेज फॉर इन्वायरमेंट क्लास। बट अगेन हियर सी IQRA IAS, ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही है, और फिर 5 क्लासेस करेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था, विच आई एम ट्राइंग टू कवर, और मैं ये सारी चीजों को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इन्वायरमेंट का अगर ऐसा मौका मिलेगा IQRA IAS का तो जरूर मैं करूंगा, आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर दैट। बट यू कैन फॉलो माई साइट, माई चैनल, वहां पर चीजें होंगी, आई विल बी ट्राइंग टू डू दैट, ठीक है। तो वेरी ग्लैड टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू। आप लोग लाइव सेशन में आए, वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आई एम वेरी वेरी थैंकिंग यू ऑल ऑफ दैट टू अटेंड द लाइव सेशन। आप लोग जो आए यहाँ पर इंटरेक्ट किया, ये एक तरह का मोटिवेशन होता है टीचर के लिए ठीक है, और साथ साथ में आपसे मैं बातचीत करता रहा हूँ, सारा कुछ करता हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज डोंट मिस द लास्ट सेशन, है ना, लास्ट सेशन मिस मत करना वहाँ पर देना। और इन्वायरमेंट का जो पार्ट है तो वो हम लोग देखेंगे कैसे उसका बेस्ट तरीका हो सकता है। तो कीप इन टच विथ मी एंड टीम ऑफ IQRA, यू विल गेट टू नो अबाउट इट, ठीक। तो वहाँ हम लोग वर्कआउट करेंगे। बहुत सारे लोग हमसे पहले जुड़े हुए हैं, मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप ज्वाइन कर लेना वहाँ पर, वहाँ भी आपको अपडेट मिलता रहेगा, राइट। एट द सेम टाइम जो टेलीग्राम चैनल है, देयर आल्सो पीपल हैव जॉइन्ड देयर, और जो मेरे अपने चैनल है यूट्यूब का, तो वहाँ भी सारी चीजें वहाँ पर है, दैट आल्सो यू कैन फॉलो दैट। तो अबाउट द एनवायरनमेंट करंट एस्पेक्ट आई विल बी डूइंग दैट। अभी मैं SRIS सुब्ररंजन IAS में मॉर्निंग में 8 AM मैं फिजिकल क्लास करोल बाग में ले रहा हूँ। आई एम राइट नाउ टेकिंग दैट एनवायरनमेंट मॉड्यूल फॉर द कमिंग प्रीलिम्स एग्जाम, एंड दैट इज द फिजिकल क्लास, एंड दैट इज सेम थिंग डिलीवर्ड ऑनलाइन हाइब्रिड मोड, राइट। नेक्स्ट वीक वो खत्म हो जाएगा, फॉलोड बाय QEP। तो वो पार्ट वो इंस्टीट्यूट का पहल है, देयर आई एम डूइंग दैट। फ्यू ऑफ यू आर ऑलरेडी देयर इन द पार्ट ऑफ इट। IQRA IAS में मैं ऑलरेडी एनवायरनमेंट मैं ले चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड एनवायरनमेंट इन कानपुर एंड पुणे, एंड दैट वाज आल्सो इन हाइब्रिड मोड। कानपुर और पुणे में भी हाइब्रिड मोड में ये एनवायरनमेंट का सेशन वहां पर हो चुका है। पहले मैं जब गया था अक्टूबर-नवंबर में, तो उस टाइम पे बहुत कानपुर पुणे में दोनों हाइब्रिड मोड में मैंने एनवायरनमेंट वहां पर पढ़ा दिया है, ठीक है। दोनों हिंदी के लिए और इंग्लिश के दोनों के लिए गए, तो वहाँ पार्ट वहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है। तो नथिंग टू वरी अबाउट, बी इन टच, यू विल ऑलवेज गेट। तो अभी जो मैं कानपुर और पुणे में आऊंगा तो वो विल बी दैट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एरिया वहाँ कवर होगा, राइट। ओके, मोस्ट वेलकम टू एवरीवन फॉर योर थैंकिंग देयर। सो आई विश यू वेरी गुड नाइट, राइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, राइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।